Right. So we were talking about we are talking about friction. तो कहाँ तक किया था लास्ट टाइम? अच्छा, उसके आगे नहीं गए क्या? हाँ, केस टू अभी नहीं किया ना? ओके. हाँ, तो the question that I had given was something like this. There were two blocks, 10 kg. There is a 2 kg block. There is a force of 10 Newton on the 2 kg block. And यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.5 है. And the question says that find acceleration. आवाज कैसे कम हो गई है? Find acceleration of both the blocks. Okay, so using the old rules, which are not applicable here, okay? I'm just showing you what happens if you use the old rules. So if you use the old rules, then when you draw the free body diagram of the 2 kg block, you get 2g, you get normal reaction n, and you get a force of 10 Newton. And then you say that look, the value of F applied that I see for the 2 kg block is equal to 10 Newton. Right? Now also we have the normal reaction as 2g, and therefore F max is equal to 0.5 into 2g, which is also equal to 10 Newton. So you will say that look, friction will be opposite to this F applied, yes, and this friction will have a value equal to 10 newtons because F applied is 10 newtons, right? And friction always matches F applied up till its maximum value. Now, ये जो फ्रिक्शन है 10 न्यूटन वाला, ये किसने किसके ऊपर लगाया है? This has been applied by the surface of the 10 kg block on the surface of the 2 kg block, right? Therefore, according to Newton's third law,
if this is a force applied by the 10 kg block on the 2 kg block, then the 2 kg block will apply an equal and opposite force on the 10 kg block, right? So what is this force? This force is the uh, equal and opposite force applied by the 2 kg block on the 10 kg block, right? And what are the other forces acting on the 10 kg block? We have 10 g due to the gravity, we have some n dash due to the surface of the floor, and we have some n due to the 2 kg block wala, right? ये और ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर हैं. Okay, so these two guys are also action reaction pairs, right? Because remember, ये जो सरफेस है, सरफेस में दो फोर्सेस लगती है. well, एक्चुअली तो एक ही लगती है, बट हम उसको दो में ब्रेक कर देते हैं. एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक होता है फ्रिक्शन. तो अगर एक सरफेस दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लगा रहा है, तो दूसरा सरफेस भी पहले वाले पे इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लगाएगा. Okay? So after having drawn the FBD and having put in the value of all the forces, now I can find acceleration. And here I can say that 10 minus 10 must be equal to 2a. So a is equal to 0. And here I must have 10 is equal to 10a. Therefore, a must be equal to 1 meter per second square. Right? Now, this is an extremely weird result. And I'll tell you the reason why it is weird. It is weird because of the fact that I have applied a force on the 2 kg block, and as a consequence, the 10 kg block is accelerating. This is what is weird about this conclusion that I have drawn. As an example, as an analogy, what I can do is I can tell you about an ice skater. Why am I talking about an ice skater? The reason is that ice skating is one of the places where I can mimic zero friction. Right? Ice skating is one of the places where the value of friction is extremely small. So, if the value of friction is extremely small, then uh, then we can actually create this situation. How can I create this situation? What do I mean I can create this situation? Well, the friction between the skates and the ice is almost zero. Okay, so I'm sorry about my diagram. I'm really bad at drawing diagrams. This is the skate. This is the ice, right? तो जो स्केट का लोअर सरफेस है वो आइस से कनेक्टेड है, वो आइस के ऊपर है. तो आ, तो स्केट और आइस के बीच का फ्रिक्शन जीरो है, जस्ट लाइक हियर फ्रिक्शन है. बट जो स्केटर है उसने तो स्केट्स पहन के रखे हैं ना, राइट? स्केट्स पहनने का मतलब है उसने तो लेस वेस बांध के रखी होगी. इसका मतलब कि जो स्केटर और स्केट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है that is very large, right? So this is the skater, and here the friction is very large, and here the friction is almost equal to zero. So what this conclusion, ये जो हमारा conclusion है,
what this conclusion is telling us कि मैंने स्केटर के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है ना, मैंने स्केटर के ऊपर फोर्स लगाया और फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्केटर तो वहीं का वहीं है, लेकिन उसके जो स्केट्स हैं वो निकल के भाग गए, which is not going to happen, which is not going to happen. So therefore all this, so this is wrong, and it is wrong because we used the rules for one surface fixed. Okay, ठीक है, तो आपको क्या, what do you take away from this? This surface and this surface, this surface and this surface, movable, movable. This surface, movable, this surface, fixed. तो यहाँ पे जो रूल्स ऑफ फ्रिक्शन लगेंगे ये केस 1 वाले लगेंगे, यहाँ पे जो रूल्स ऑफ फ्रिक्शन लगेंगे ये केस 2 वाले. Okay, so I'm going to show you two methods of solving. I don't know which method you will find better. I will show you both the methods, and we'll do a lot of questions in this. So what you need to do is you need to do all the questions twice using both the methods, and then you can conclude कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है. Okay? So let me start with the next. Case 2. अब वो याद है किसी को मैथ्स में एक प्रूफ होता है, राइट, मैथ्स में एक प्रूफ होता है, कौन सा होता है मुझे याद नहीं है, जिसमें उल्टा प्रूफ करते हैं. रिमेम्बर क्या बोलते हैं उसको, तो अभी तो बताया गया था, मैं भूल गया फिर से. कॉन्वर्स नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन. हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन में, proof by contradiction में what happens is that you assume something, right? You start off by assuming that this is true, and then you carry out a series of mathematical steps and you arrive at something which is contradictory. Something like 0 is greater than 1. Something like 0 is equal to 5. And when you arrive at something contradictory, it means that your original assumption was wrong. Okay? So here we are going to do something similar to that.
हैं, something similar to that. So we have 10 kg, everything is the same. We have the 10 kg and we have 2 kilograms and we have the force 10 Newton here. We have mu is equal to 0 here. We have mu is equal to 0.5. So I am going to assume that under the influence of these two forces, the two blocks will move together. I am going to assume that under the influence of this force 10 newtons, these two blocks are going to move together and their acceleration will be a. Right? So assumption. This is what you are going to assume in every question. Assumption. Both blocks. रुक जाओ रुक जाओ. Both blocks move as one with acceleration a. Okay. So if both the blocks are moving together, then I have one block of mass 12 kg, right? This is the key step. अगर मैंने पूरे दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम ले लिया तो मेरे पास फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर इज ओनली वन ब्लॉक ऑफ मास 12 kilograms. What are the forces acting on the block? 12g, and then we have some normal reaction n. Okay, and then we have a force F is equal to 10 newtons, and there is no friction on this. There is no friction on this because इसका जो एक्सटर्नल है वो तो ये फ्लोर है. 12 किलो का जो एक्सटर्नल सरफेस है वो ये फ्लोर है. और जैसे ही मैंने इसको एक ब्लॉक मान लिया 12 किलो का, जो इंटरनल फ्रिक्शन है, जो इंटरनल सरफेस है, that has got no role to play. Okay, so please never be confused. अगर आपने ये येलो सर्कल, ये येलो बाउंड्री बना दिया तो whatever is inside the boundary becomes one object, and whatever interaction may or may not happen or may not be happening between those two objects really does not matter. Okay? हाँ, उसके एक्सटर्नल क्या है येलो बाउंड्री के, वो मैटर करता है. एक्सटर्नल क्या है? वो जो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया है, जो अर्थ फोर्स लगा रही है, और जो सरफेस. So after having done this, I will apply the second law of motion and I will find out the value of A. So 10 is equal to 12A. A is equal to 10 by 12, which is equal to 5 by 6 meter per second square. Right? Now, at this point, you must ask me, you should be curious that भाई तो ये हम कॉन्ट्रडिक्ट क्या करने जा रहे हैं? What are we going to contradict? Where is the contradiction going to arise from? Well, after you have found acceleration, right? After finding acceleration, we must consider any one block and find the friction between the blocks. राइट, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, हमने ये अज्यूम किया है कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं और हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया. अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, ये काम तो हो गया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू is I am going to look at one block, any one block, and I am going to find out the friction between the blocks. Okay, I am going to find out the friction between the blocks.
So I can either take the 2 kg block or I can take the 10 kg block. I will take the 10 kg block. The reason is that 10 kg block पे केवल एक ही फोर्स लगी हुई है. तो ये जो मैंने FBDs बनाई है यहाँ पे ना, ये FBDs बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. FBDs आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द प्रॉब्लम लाइज इन दिस, ये गलत है. ओके, so I am going to draw the same FBD for the 10 kg block here, and I am going to write down 10G plus N, and then due to the floor sum and dash, actually you don't have to do this. Vertical वाले forces हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही हैं. और यहाँ पे जो फोर्स है that is the force of friction. So for the 10 kg wala block, we will have F is equal to MA, and that is equal to 10 into 5 by 6. That is equal to 50 by 6 newtons. Right? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने जा रहा था, newtons. So using this acceleration, I have found the force of friction acting between the two blocks. Now what we do is that we find the maximum possible force of friction, F max, right? और ये जो पिछले स्लाइड में F max निकाला है, ये भी बिल्कुल सही है, also absolutely correct. Okay, so F max I want to calculate. This will be equal to 0.5 into N, which is equal to 0.5 into 2G, and this will be equal to, and this will be equal to 10 newtons. Okay, now look at this friction force. Look at this friction force, 50 by 6 newtons. Is it less than or greater than 10 newtons? Is it less than or greater than 10 newtons? This friction force, is it less than or greater than 10 newtons? So this is less than F max. Okay? If it is less than F max, then this means that my assumption was absolutely correct. So this implies that the assumption was correct. And if the assumption was correct, then this is the answer. Both the blocks, they move as one with acceleration a is equal to 5 by 6 meter per second. Right, which is completely different from the answer, that we had in the previous slide. Okay, वहाँ पे तो अजीब सा ही आंसर आ रहा था. अब यहाँ पे जो आंसर आया है, that is this is the correct answer, right? And this is the way to handle हाँ हाँ, और बता रहा हूँ भाई, अभी रुक जाओ, सब बता रहा हूँ. एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट.
हाँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ जोए बोलो। सर आपने जो लास्ट एफबीडी में आपने 10 न्यूटन का जो फोर्स बनाया था वो कहाँ गया? फ्रिक्शन था ना वो। नहीं फ्रिक्शन सर, की आपने बोला वैल्यू था कहाँ ना से कहाँ रहती है? एक्शन रिएक्शन पैर, आपने एक बोला था ना। बेटा फ्रिक्शन है ना ये तो, फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? सर 0 से एफ मैक्स तक। ये मैंने 10 न्यूटन क्या चीज है ये? ओके ओके, समझा। और सर अगर हम लोग एक सम सॉल्व कर रहे हैं मेथड से, तो सर हमें ये सेकंड वाला पार्ट करना पड़ेगा क्या कि फ्रिक्शन चेक कर रहे हैं हम एफ मैक्स से कम है या नहीं? कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से लेके आएगा? हाँ कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से लेके आएगा? ओके, तो सर हमें हमेशा ऐसे ऐसे लंबे से करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पे नहीं रुक सकते? रुक जाना, रुक जाना और बोलना कि नहीं मैं तो नहीं बढ़ूंगा आगे, हम नहीं रुक सकते। ओके सर, ओके सर। सर अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो क्या करेंगे? वही दिखा रहा हूँ मेरे भाई, रुक जाओ ना, मैं कहीं भाग नहीं गया ना। मैं ओके भागा हूँ क्या? नहीं नहीं। तो फिर नाउ F is equal to 15 न्यूटन। यहाँ पे विल स्टिल टेक u is equal to 0। विश्वजीत जो तू पूछ रहा है वो अगले अगले क्वेश्चन में। विश्वजीत पूछ रहा है कि अगर यहाँ म्यू 0 नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होएगा, वो उसका फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। Okay, so the question is find the acceleration of both blocks. Please follow me very carefully, very carefully. Assumption: both blocks move together with acceleration a। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं और ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। So for all practical purposes then I have the 12 kg block, जिसके ऊपर इधर जो फोर्स लगा है वो 15 न्यूटन का लगा है। बाकी वर्टिकल फोर्सेस लगे हैं, 12 g है और एक n dash है, which I am not really bothered about. So this tells me that 15 will be equal to 12a. So a will be equal to 15 by 12, which is equal to 5 by 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एक ब्लॉक माना और मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया कि भाई इतनी फोर्स लगी थी, ये एक्सेलरेशन है, कहानी खत्म। अब जोएब ने बोला यहाँ रुक क्यों नहीं जाते? यहाँ हम इसलिए नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हमारा तो ये अजम्पशन था ना। तो ये मैंने बोला कि नहीं जोहेब, मैंने अज्यूम कर लिया तेरा नाम तो रवि शर्मा है, अब तो मैं तेरे को रवि शर्मा बोलूंगा। राइट, so this is wrong. Okay, so I have made an assumption. I need to confirm or contradict my assumption. अगर ये assumption confirm हो गया, good. अगर ये assumption contradict हो गया तो मेरा assumption गलत है and something else is happening. So to test, okay, let me call this check.
test, check whether my assumption is right or wrong, I will take one block. Okay, ये भी लोगों का, ये भी I think the question was asked you, why are you taking the 10 kg block? I can take either block. I'll take the 2 kg block this time. So 2 kg block पे जो forces लगे हैं वो 15 है और F है. Please notice. Now I don't write the maximum value of friction because it is friction that I want to find out, and it is the value of friction that I'm going to get will tell me whether my assumption is correct or incorrect. So the acceleration of the 2 kg block is 5 by 4. So I will have an equation which is 15 minus F is equal to mass into acceleration. Right? यही 10 kg block के साथ भी कर सकते थे. In fact, you should do it in your copies. So F is equal to 15 minus 10 by 4, okay, which is equal to 60 minus 10, that is 50 by 4. And we know that here F max between these two surfaces is equal to 0.5 into 2g, which is equal to 10 newtons. And is this F greater than or less than this F max? Is this friction greater than or less than this F max? 50 by 4 बड़ा होता है या 10 बड़ा होता है? 50 by 4 is greater than this F max. Right? Now we know that the friction cannot be greater than F max. ये तो impossible है. This is just like saying 0 is greater than 4, 3 is greater than 4. Right? So this means, this implies that my assumption, so this means that the assumption was wrong and both blocks do not move together. And if the two blocks are not moving together, if the two blocks are not moving together, then I have to go back and I have to draw the FBD for both the blocks and I have to work everything out again. So drawing the FBD for the 2 kg block, I get a 15 Newton force here. And now I know that the blocks are not moving together. That means that the blocks are sliding over each other. आपस में slide कर रहे हैं because their accelerations are different. And just like in case 1, when there is motion between the two surfaces, this means that now, without any question, the friction has reached its maximum value. So the acceleration of the 2 kg block, is equal to 15 minus 10 divided by mass, that is equal to 2.5 meter per second square, and the acceleration of the 10 kg block, which is only due to friction, will be equal to 10 is equal to 10A, and this implies that A is equal to 1 meter per second square. यहाँ पे मेरे को I should be careful. I should write A1 here. I should write A2 here because the accelerations are different. तो इस केस में ऊपर वाला block will be moving with an acceleration of 2.5 meter per second square, whereas the lower wala block will be moving with an acceleration of 1 meter per second square, right? So whenever you see two blocks, this is the first method. I'll tell you another method. Whenever you see two blocks, assume that they are moving together and find the acceleration. After having found the acceleration, you will find the friction between the two blocks. If this friction is greater than the F max value, then your assumption is wrong.
and the two blocks are not moving together. In this case, you will draw the FBD of the two blocks again separately, and you will keep friction at its maximum value. अब F नहीं लिखने की जरूरत है, अब सीधा F max लिखने की जरूरत है. Then you will find the separate accelerations of the two blocks. If, however, the friction comes out to be less than F max, then this means that your assumption is absolutely right, and the two blocks are indeed moving together, and whatever acceleration you have found is the answer, right? Please notice that अगर आप इस क्वेश्चन को ऑन द फेस ऑफ इट देखोगे और आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट वेरी वेरी ड्रास्टिकली different and wrong results. Okay, so the case one, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहा था ये केस वन पे एप्लीकेबल है, ये केस वन पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जब केस टू आएगा तो ये एफ अप्लाइड और उसका जो कॉन्सेप्ट है ये सब गायब हो जाता है. तो हियर रिमेंबर दैट the rules of case one, they do not apply. Okay, so now let me give you a question. अब आप ये ट्राई करो अपने आप. 10 kg, 2 kg, mu equal to 0, mu equal to 0.5, F is equal to 50 Newton. नीचे वाले ब्लॉक में फोर्स लगाया. And so find acceleration of both blocks. Why friction is not maximum though acceleration is there? भैया relative acceleration जब होता है तब friction maximum होता है. Okay? आप अपने हाथ पे पेन को रखो और अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, पेन भी साथ में बढ़ेगा. That does not mean that the friction between your hand and pen has become maximum.
दोनों का एक्सप्रेशन बताना है। मेरे को बस ये बताओ कि दोनों मूव करेंगे कि अलग अलग मूव करेंगे? विल दे मूव टुगेदर और विल दे मूव सेपरेटली? -2 तो स्मिथ हो नहीं सकता है ना यार। मैं तेरे को आगे की तरफ खींचूं, तेरा जूता पीछे चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना स्मिथ। So we assume that both the blocks move together, and we assume that the acceleration is a. So basically, we have a 12 kilogram block जिसके ऊपर फोर्स F is equal to 50 न्यूटन लगा है. Okay. So now, if I were to draw the individual FBDs, if I were to draw the individual FBDs, then I would get for the 2 kg block 2G and F, and for the 10 kg block I would get capital F, F, 10G, N, and separately, I'm almost willing to bet that your FBDs are wrong. और आपने पुराने वाले FBDs यूज कर लिए हैं. The force is now being applied on the 10 kg block. So when I apply this force here, then block like so, and there will be a friction force on the 2 kg block like so. Remember that यहाँ ये जो इंटरमेशिंग है बिटवीन द सर्फेसेस, जब मैं 10 kg वाले को आगे खींचता हूँ, जब मैं 10 kg वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो 2 kg ब्लॉक को 10 kg ब्लॉक को रोक रहा है, राइट? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ. I'll say it again. Remember that अभी आवाज आ रही है? दो नहीं.
हाँ भाई सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था, अनस्टेबल है, मेरे सारे स्लाइड भी गायब हो गए। 10 kg, right? So I had drawn the 2 kg का FBD, 10 kg का FBD, 10G plus N, N1, F, 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 G, और जब हमने इसको एक ब्लॉक कंसिडर किया और एक्सेलरेशन A assume किया, then we get 50 is equal to 12A, or A is equal to 50 by 12, that is 25 by 6 meter per second square. Now you can consider either this FBD or this FBD, does not really matter. मैं ऊपर वाला FBD मान के चल रहा हूँ, तो ऊपर वाले FBD के हिसाब से for the upper FBD, F is equal to MA, right? Let me just, for this guy, F is equal to 2A, that means F is equal to 2 into 25 by 6 is equal to 50 by 6. And remember that F max, पहले ही workout कर चुके हैं, is equal to 10 Newton. So this is less than F max. This implies that the assumption is absolutely correct. Both blocks ये F क्या लग रहा है विश्वजीत, क्या लिखा होगा ये F से क्या होगा ये फ्लावर, F फॉर फ्लावर, F फॉर, हाँ कौन सी फोर्स विश्वजीत, कौन सी फोर्स, ब्लॉक्स, कौन सी फोर्स विश्वजीत, हाँ तो और तो कुछ हो नहीं सकता ना, स्मॉल f में हमेशा फ्रिक्शन के लिए यूज करता हूँ ना. So the answer to this question is 50 by 6 meter per second square for both the blocks. So एक और, ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन या मे बी सेकंड लास्ट क्वेश्चन. प्रसन्ना सारी स्लाइड्स गायब हो गई क्योंकि मेरा नेटवर्क गायब हो गया.
हाँ, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन करो। 1.5 घंटा बोलते रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। पहले you have to answer. First, you have to tell me whether they will be moving together or separately. Please use what I have done. ऊपर FBD आपके लिए सारे बने हुए हैं. Assume. हाँ, very good, very good. Yeah. Oh, excuse me, excuse me. Yes, absolutely right. अब अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, if we are at the conclusion that they are moving separately, then we must find the separate accelerations.
Next question. Last question में they both move separately. हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेपरेट मोशन होगा. यस. ये सेम आ रहा है. ओके. ओके. तो पहले ये वाला करते हैं. एक साथ ये एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा 70 इज इक्वल टू 12 ए इज इक्वल टू 70/12 एंड 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक सो. F is equal to 2 into 70/12, which is equal to 70/6, which is greater than F max. Therefore, both blocks move
separately. And we can find the acceleration from this. ये तो FBD already बने हुए हैं. तो 10 is equal to 2a1. So a1 is equal to 5 meter per second square. And 70 minus 10 is equal to 10 a2. So a2 is equal to 6 meter per second. 5 and 6 इसका आंसर. यहाँ पे we consider them as one block. Now what Vishwajit was asking, नीचे भी फ्रिक्शन आ गया, लेकिन ये जो नीचे फ्रिक्शन है ये केस 1 वाला है, इसमें कोई केस 2 नहीं है. तो हमारे पास आएगा 10 kg ब्लॉक और इसके ऊपर जो फोर्स है वो है 40 न्यूटन्स और यहाँ पे अब फ्रिक्शन लगा हुआ है इसके ऊपर. And this is equal to 0.1 into n here, which is equal to 10 g. So here the force is 10 newtons. So we get 40 minus 10 is equal to 10 a. A is equal to 3 meter per second. अब check कर लेते हैं एक बार. I think everybody is getting this as the answer, so just let me check. ऊपर वाले ब्लॉक पे चेक करते हैं. 5 kg. ऊपर वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल केवल फ्रिक्शन फोर्स लगी है F. So F is equal to 5a, which is equal to 15 newtons. And then we have to find the value of F max here. यहाँ पे F max हमें निकालना है. F max will be equal to 0.4 into 5 into g, which is equal to 20 newtons. Right? So here we have less than F max. Therefore, the assumption is correct. A is equal to 3 meters. 0.1 into 10 into 10. बताओ भाई क्या आएगा इसमें? 0.1 into 10 into 10. मैंने पूछा था, किसने पूछा था? अद्वैत ने पूछा. हाँ आ गया ना समझ में अद्वैत. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Please do this very carefully. Find acceleration of both the bodies.
करो। सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। 50 न्यूटन ज़्यादा बड़ा फोर्स है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि इधर ये मूव कर रहा है। So basically I have an 11 kilogram block which is under the influence of 50 here, 10 here, एंड फ्रिक्शन भी होना चाहिए यहाँ पे, और फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि वो मूव कर रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होएगा यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन होएगा 11 g into 0.1, दिस विल बी 11 newtons. So I get 50 minus 10, 40 minus 10, 40 minus 10 कितना? 40 minus 11, 40 minus 11 कितना आएगा? 29. 29 is equal to 11a. A is equal to 29 by 11 meter per second. रुक जाना स्मिथ, मैं तो वर्कआउट कर ही रहा हूँ ना, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ ना मैं। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द F max at this surface. So F max here will be equal to 0.5 into 6 into G. That is equal to 30 units. Now let's talk about, let's check 5 kg वाले पे मैं चेक कर रहा हूँ. I can do it for 6 also. 5 kg वाले ब्लॉक पे 50 न्यूटन इधर लगा है, 11 न्यूटन फ्रिक्शन नीचे सरफेस से लगा है और F फ्रिक्शन ऊपर सरफेस से लगा है. So I will have 50 minus F minus 11 is equal to 5A. F is equal to 50 minus 11 minus 5A, that is 5 into 29 by 11. क्या वैल्यू आएगी इसकी? आई एम सॉरी, थोड़ी सी गंदी गंदी वैल्यूज हो गई. कैलकुलेटर ये रहा, 25.8 आएगा पक्का. 29 divided by 11 into 5 plus 11. हाँ, 25.8. Yes, 25.8. But F max तो 30 है. So this is less than F max. This implies that the assumption is correct. Friction due to ground. Yeah, so they will move together absolutely, and the acceleration will be 29 by 11 meter per second. अपने आप करो प्रसन्ना, डोंट रिलाई ऑन मी फॉर एवरीथिंग. अपने आप करो ऊपर वाले ब्लॉक पे. रिजल्ट आपके सामने है. यू नो दिस इज द रिजल्ट, राइट? हाँ, फिर से करो ना भाई. इफ यू आर स्टक तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हर बार पूछ लो. 10 इधर लगेगा और F इधर लगेगा. F
minus 10 is equal to 6. करो डालो f का value. Chalo, okay. So I will see you in the next class. Please finish HCV now. You can do all the questions from HCV. In the next class, we'll continue doing this. There are a few more questions that I have to discuss from this. Okay, and then next class we'll start with a new topic. Okay. Chalo, bye bye. I will see you. I think tomorrow or day after tomorrow. I don't know. HCV पूरा करना है सबको पहले. प्रसन्ना पहले HCV खत्म कर फिर मैं बताता हूँ. हाँ, I'll teach you the second way ना. चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय.